Rahman Rahim. Now we are going to start chapter number 9 from the book of Electromagnetic Theory by D.J. Griffith, and the book title is Introduction to Electrodynamics. Chapter 9 is about electromagnetic waves. So you know what are electromagnetic waves? The waves that are produced by electric and magnetic fields are known as electromagnetic waves. First of all, we will try to know what is a wave. A wave is a phenomena, is a disturbance, is a specific shape that move from some initial point I to some final point F, and in this way it carries some energy from the source to the destination, so that wave can be considered as a disturbance that carries energy from one point to another point, and it have some given amplitude as well as frequency. Mean wave will have some amplitude as well as frequency, so that there are two main characteristics that are necessary for a wave, and one is amplitude and the other is frequency. Amplitude क्या है? Amplitude, as wave move, it will oscillate about a given mean position. For example, let we have a wave as is shown in the below diagram. This is a sinusoidal wave, and it will have amplitude which is equal to A, and this is from the mean position to the maximum disturbance point of the wave. As wave travel, it will cover some distance along z-axis. For example, it may be along x-axis or along y-axis, or maybe in space for mean along the combination of three directions, so that wave will travel some distance z with speed v in a time t, so that speed of the wave can be find as z over t, where z is the distance covered in a time t. Let what happens to the amplitude of the wave as wave travel. As wave travel, it might be possible its amplitude may be decrease, and if its amplitude decreases, it means that energy is being absorbed by the medium in which wave is traveling, or it might be possible that wave is spreading, so that as wave will spread, its intensity will get low, and consequently its energy or amplitude will decrease in different directions. So there are two causes to decrease the amplitude or energy of the wave, and one is absorption due to the medium, and second is spreading. So amplitude of wave can be decreased by absorption or spreading of the waves in different directions. So you can represent wave by a mathematical function f, where f will denote the amplitude of the wave and is a function of space and time. मीन्स स्पेस में वेव ट्रेवल करेगी टाइम के साथ साथ. इट मीन्स ए मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करते हैं तो मैथमेटिकली यू कैन रिप्रेजेंट अ वेव बाय ए फंक्शन एफ that represent the amplitude of the wave at a point z and at a time t. Next we elaborate these two things, z and t. So mathematically you can represent a wave by a function f, which denote the amplitude of the wave, and by the and it depends on two variables z and t. Let's draw this waveform. Let's suppose we have a wave
whose amplitude and is traveling along z-axis. So let at when you observe the wave at time t is equal to 0 was observed in this form z0, mean waveform at a time t is equal to 0, and after some time t this wave will travel along z-axis, will cover some distance, and its new waveform will be like this. One thing to be remembered is that waveform of the wave will not change. It might be possible that its amplitude may get changed, but its waveform will remain constant. मीन एम्पलीट्यूड कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वेव फॉर्म चेंज नहीं होगी. तो ये आपके पास वेव फॉर्म है टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पे, एंड आफ्टर सम टाइम t you can represent the wave by function f, z and t, so that the wave have covered a distance z which will be equal to v into t, and we have to find a relation between these two waves. Let you can represent the wave at time 0 by a function g that depends on z. And what will be the relation between these two waveforms, one at time t is equal to 0 and other at time t? मीन ये तो दो वेवफॉर्म है आपके पास, एक टाइम t इज इक्वल टू 0 पे है, दूसरी टाइम t पे है. तो इन दोनों को आप कैसे देख सकते हैं? अब देखते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वेव का सेकंड पॉइंट पे उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा फर्स्ट पॉइंट पे, और फर्स्ट पॉइंट क्या है, t इज़ इक्वल टू 0. मीन अगर हम सेकंड वेव को लेफ़्ट साइड पे या बैकवर्ड मूव करवाएं, कितना डिस्टेंस अगर हम मूव करें जितना डिस्टेंस इसने कवर किया, मीन ये डिस्टेंस इस वेव ने कवर किया, अगर हम इतना डिस्टेंस सेकंड वेव फॉर्म को बैकवर्ड ले आएँ तो इसका एम्पलीट्यूड वही होगा जो कि इस वेव का एम्पलीट्यूड था टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पे. तो हम लिख सकते हैं एफ जी टी इज़ सेम एज एम्पलीट्यूड is same as f z minus vt at time 0. तो mean the function f is dependent on z and t, and here is the relation of dependency z minus vt, so that you have written f z0 is equal to gz, and you can write f z minus vt 0 as g z minus vt. तो mean you can represent a wave by any function whose argument look like z minus vt, where z is the distance, t is the time, and v is the velocity of the wave. You can see that wave may also travel along x-axis or y-axis, and then you can replace z by x, y, or etc. anything. Now let me derive the wave equation, the equation whose solution is a wave function. Mean we want a equation that can be used to find the behavior of a wave. अब इसको हम बोलेंगे वेव इक्वेशन. तो वेव इक्वेशन क्या होगी आपके पास, उसके लिए आप एज्यूम करें कि लेट ए वेव इज़ ट्रेवलिंग अलॉन्ग ए स्ट्रिंग. लेट वी हैव ए स्ट्रिंग दैट इज़ फिक्स्ड एट वन एंड, and from one end you are moving the wave, moving the string up and down, so that in this way there will be a wave from one point to other point and will move in from source to the destination. For this wave, the displacement of the particle of the medium, means string के particle will move perpendicular to the direction of propagation of wave. Mean displacement
or velocity both will be in perpendicular direction, and this wave also known as a transverse wave. Now let's suppose we have a small portion of this wave as is shown in the below diagram. कि हमारे पास ये वेव है, उस वेव का हम एक स्मॉल पोर्शन सेलेक्ट करते हैं जिसमें ये z एक्सिस है और ये एम्पलीट्यूड है, और लेट ये आपके पास वो स्मॉल, जब आप वेव को मूव करेंगे यू आर delivering energy to the string, and this energy is being carried by the wave, so that there will be tension T inside the string. तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी उसको आप T लिखेंगे. तो अगर हम इस एक स्मॉल पोर्शन को यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, ये स्मॉल पोर्शन अगर हम इसका सेलेक्ट कर लें स्ट्रिंग का, जो कि आपके पास इस वक्त मौजूद है z और z प्लस डेल्टा z इन पोजीशन पे है. तो इन पोजीशन पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे टेंशन आपके पास जो स्ट्रिंग में टेंशन होगी ये इस डायरेक्शन में होगी, और यहाँ पे जो टेंशन होगी ये इस डायरेक्शन में होगी, सो डैट वे विल ट्रेवल अलॉन्ग z एक्सिस, और यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सेगमेंट है इज़ इक्वल टू डेल्टा z. मीन ये डेल्टा z जो है ये स्ट्रिंग लेंथ आपके पास जो पीस है उसकी होगी. अपर एंड विल मेक एंगल अलॉन्ग हॉरिजेंटल, एंड लेट वी डिनोट दिस एंगल बाय थीटा प्राइम. सिमिलरली लोअर एंगल साइड विल मेक सम एंगल थीटा with the horizontal as is shown in the diagram. As the string is not moving along horizontal direction, so total force along horizontal direction will be 0. But as wave is traveling along transverse direction, means string is moving up and down, so that there will be a net force in the upward direction or vertical direction, and you can find this total force F, which will be the equal to sum of two forces, force being at the upper end and force being at the लोअर एंड. अगर हम इस फोर्स को टेंशन को दो हिस्सों में डिवाइड करें यहाँ पे, तो यहाँ पे टेंशन के दो पार्ट होंगे, वन विल बी अलॉन्ग वर्टिकल एंड अदर विल बी अलॉन्ग हॉरिजेंटल. सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट होगा. यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, एंड द वर्टिकल कंपोनेंट इन एट दैट पॉइंट विल बी अलॉन्ग अपवर्ड डायरेक्शन, सो डैट टोटल फोर्स विल बी अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, और अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू T इनटू साइन थीटा प्राइम, एंड डाउनवर्ड फोर्स विल बी T sin theta, and total force will be T sin theta prime minus T sin theta. So that total vertical force will be equal to T sin theta prime minus T sin theta. अगर हम एज्यूम करें वेव एम्पलीट्यूड और डिस्टॉर्शन इन द स्ट्रिंग इज़ नॉट टू मच लार्ज, then the angle theta and theta prime will be smaller, and you can replace sin theta by tan theta, so that delta f will be equal to T tan theta prime minus tan theta, and theta is the angle at position z, and theta prime is the angle at position z plus delta z. As you know that tan theta is the slope of the function or of a wave, so you can write delta f as, delta f को आप लिख सकते हैं delta f is equal to capital T into tan prime theta, and tan prime theta क्या slope of the function at z plus delta z, mean partial f over partial z at z plus delta z minus partial f over partial z at z, where partial f or partial z is the slope of the function f
with respect to z. देखिए f is the amplitude or vertical and z is the horizontal, so that slope will be partial f over partial z, and this slope further can be written as, अगर हम इस इक्वेशन को डेल्टा z से डिवाइड कर दें और डेल्टा z से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा, यू विल गेट partial f over partial z at z plus delta z minus partial f over partial z at z. We multiply and divide by delta z so that as delta z approaches to 0, this can be written as, we are selecting a patch whose length is very small, so that you can write partial f over partial z at z plus delta z minus partial f over partial z at z over delta z as partial square f over partial z square, और साथ आ जाए आपके पास आ जाएगा डेल्टा z, और आपके पास आ जाएगी टोटल वर्टिकल फोर्स जो होगी वो डेल्टा एफ विल बी इक्वल टी partial square f over partial z square into delta z. Let this will be equal to equation 1. Now from equation 1 we can see that the total force on this segment of length dz of this length dz will be equal to tension into partial square f over partial z square into delta z. And if we move towards Newton's second law, and according to Newton's second law, delta f or force is equal to m into a, where m is the mass and a is the acceleration. Now what will be the mass of this small patch of length delta z? You can find the mass of this small patch length from the mass density mu, where mu is the mass per unit length, so that mass will be equal to mu into dz, will delta z will be the length of the patch, and acceleration, what will be the acceleration? Acceleration will be equal to partial square f over partial t square, as f is the amplitude or displacement of the wave particle, so that acceleration will be partial square f over partial t square. So now we will get two equations. Equation 1 is from Newton's second law, and equation 2 is from Newton's second law, and equation 1 is from the sum of two forces, or from the equilibrium condition. If we equate these two forces, then we will get T into partial square f over partial z square into delta z will be equal to mu delta z into partial square f over partial t square. And this goes to partial square f over partial z square is equal to 1 over capital T partial square f over partial t square into mu. And this equation is known as wave equation, और हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं. If we let mu over t as 1 over v square partial square f over partial t square, where v will be equal to t over mu, v square will be equal to t over mu. And we will see next that capital T tension over mu is equal to velocity of the wave particle. This is the wave equation, and now the solution of this wave equation will be known as wave function. तो इसका सबसे पहले हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. हम इससे पहले देख चुके हैं कि एक सोल्यूशन हमने फाइंड आउट किया था वेव का, दैट वाज इक्वल टू g into z minus vt. Mean this function was used to represent the wave that is moving with velocity v and covering distance z in time t. Let we put this solution into equation, and first what will we do? We will take its second derivative with respect to z and with respect to t, and will put into equation 3. Let's start to complete this.
From the wave equation we can see that we have seen that a solution in the form of g of z minus vt represent a wave, and whether it represent a wave or not we can see it by inserting into wave equation. तो फॉर डैट वी फर्स्ट टेक दी सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, उससे पहले हम बात करते हैं लेट u इज इक्वल टू z माइनस वी टी, सो डैट यू कैन राइट एफ जी टी इज इक्वल टू जी यू, सो डैट पार्शियल f over partial z will be equal to partial g over partial u into partial u over partial z, and this will be equal to partial g over partial u, and partial u over partial z will be equal to 1. Next, partial square f over partial z square will be equal to partial square g over partial square partial square g over partial u okay, let's start. Partial square f over partial z square will be equal to partial square g over partial u square and partial u over partial z, and this will be equal to partial square g over partial u square. Next we have find the one part of the equation 3. हमने इक्वेशन थर्ड का एक पार्ट फाइंड आउट कर लिया, एंड वी विल फाइंड पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल टी स्क्वायर. इसको हम फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले हम पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी फाइंड आउट करेंगे. इट विल बी इक्वल टू पार्शियल जी ओवर पार्शियल u into partial u over partial t, and it can be written as partial f over partial t is equal to partial g over partial u and partial u over partial t. इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ जो हमने सपोजिशन की हुई है यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस वी के इक्वल, तो यहाँ आपके पास माइनस वी आ जाएगा. सिमिलरली हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल टी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा वी स्क्वायर इनटू पार्शियल जी ओवर पार्शियल यू स्क्वायर. वी विल पुट दीज टू सॉल्यूशन, one for partial square f over partial z square and one for partial square f over partial t square in equation number 3, and we will see that these two part satisfy the wave equation, and hence solution of the wave equation will be equal to gz minus vt. We have seen that फ्राम अगर हम बात करते हैं वेव इक्वेशन की तो यहाँ से हम देख सकते हैं हेयर इज़ 1 over v square. 1 over v square mean if wave is traveling along z axis v will be positive, and if wave is traveling along minus z axis wave velocity will be negative. But either wave is traveling on positive direction or in negative direction, it will not affect the wave equation, and wave equation for these two traveling wave will be same, so that the solution f zt is equal to g z minus vt will be same either velocity is positive or velocity is negative, so that you can write another solution as hz plus vt. Here wave is traveling along minus z axis and here wave is traveling along positive z axis, and generally अगर हम बात करें solution की, then solution will be comprised of these two component. One is g z minus vt plus h z plus vt, so that at a time wave may be traveling along
positive and negative z axis are along only one axis, and you can eliminate the other part. And this is the wave equation, and main feature of this wave function is that its argument is of this type, linear argument, mean g z माइनस वी टी लीनियर आर्गूमेंट है आपके पास। इसका ये वाला जो आर्गूमेंट है इसमें कोई भी पावर स्क्वायर में नहीं आ रही। हाँ, इधर स्क्वायर हो सकता है ऊपर, लेकिन इधर अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में स्क्वायर नहीं होगा। अगर ब्रैकेट में स्क्वायर होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से देखते हैं इसी को वेव को, तो z माइनस वी टी को अगर हम ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं तो आपके पास v आ जाएगा z ओवर टी, दैट इज़ वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो ये सोल्यूशन होगा, अदरवाइज़ ये सोल्यूशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जी स्क्वायर माइनस वी टी है, इसको आप ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं तो आपके पास v विल बी इक्वल टू जी स्क्वायर ओवर टी एंड विच इज़ नॉट अ करेक्ट रिलेशन। तो ऐसे तमाम फंक्शन जिनमें आर्गूमेंट जो वो स्क्वायर पावर के साथ आए वो वेव को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो दैट इज़ आवर लेक्चर अबाउट वेव इक्वेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 9.1। थैंक यू। कल हम साइनोसॉइडल वेव से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट मूव करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।